इतने ब्राइट लग रहे हो. So towards your right. Right there. If I'm not mistaken, this is the first film set against the backdrop of golf. So, and was it a conscious decision for you to add the cricket backdrop because there will be a connect in terms of the audience because Yeah. Indians especially. No, I know. It's basically people who've got a natural swing at the game. So a lot of now ex-cricketers have taken golf as a hobby or a passion or as a profession. So it's very similar, the swing in cricket and the swing in golf. So what we've done is that we've cultivated the story from that. But basically it's an inspirational film. It's about Rags to Riches story. It's about how we sometimes feel that our kids are not capable of playing tennis, golf, any rich man's sport. But if you have the talent to back you, you can go for it. So it's his journey. It's his inspirational journey from being a nobody to going ahead and becoming the Indian champ. Hi, this is Simrita from Filmy Curry. Towards your left, please. Towards your left. Yes. Yeah. Sorry, I can't. Sohail, you said you wrapped the shoot in 40 days. So can you just elaborate? How was it? Was it difficult or? 40 days मतलब पिक्चर ठोकी नहीं, सुबह से लेकर रात तक के काम किया. No, I mean, it's the shortest you said, so. 55. Yeah, in fact, I lied to you. We did in 38 days. Finished in 30 days. But, Nawaz Bhai, Mahesh. ये कोनी बोल दे के दिख रहा है. We were very well prepared with this film. So we used to roll at 7 o'clock in the morning, and there were very few locations. So we actually managed to pull the film because it was Oxford golf course that we shot at, and there was JP Greens and JP Wishtown in Delhi. And there was no confusion while shooting because I'll get somebody up on stage also who was a golf consultant to us, and we were very clear in what we want to shoot because golf can be a very complicated game. It is a complicated game. In fact, our first teaser went like this that confuse mat kar, sirf ye bol कि ball को खड्डे में डालना है ना. So that was the first concept of the one line. But I want to get somebody on stage as Siddharth, and who made the sport easy for us, and he was a golf consultant with us on every day of the shoot. So we shot very precisely and with his advice. So technically we've got, we didn't want to go wrong with the format of the game. And we wanted to use the technicalities of the game where any golfer also will say that, okay, fine, you can't show the full game, but if you jump, technically we were right. So अगर एक कैलकुलेशन दूं मैं आपको, यही फिल्म जो कि एक 38 डेज के अंदर बनी है, मेरे साथ बनती तो अरबाज how many days? 135 days. Hi, Sohail. This is Astha from Movie Fight. Hi. आपको तो आस्था चैनल होना चाहिए. So, Sohail, like you mentioned earlier, that the idea of making this film occurred to you while playing golf. So, how did you combine the idea of golf and making it freaky and making it inspirational with an edge at the same time? I think that just develops. I initially, when I wanted to make a film on a sport, and then from a sport, a couple of years back, I went to a golf course and I wanted to make a film which is an inspirational film. So when it's a Rags to Riches story. So I think it's just a thought that I had, but the one who knitted the thought together was Raj. So where the writing is concerned, I must give him full credit for the film. My question is from Salman. Hi, this is here on your right, Salman. Here. Hi, I'm Atika Ahmed Faruqi from Mr. Cineplex Colors. आपकी नवाज के साथ बहुत अच्छी हमने रिलेशनशिप देखी बजरंगी भाईजान में. दोनों की ऑन स्क्रीन इमेज में, पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का फर्क है. आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसी है? किक में भी साथ में थे, वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है. अब शाहरुख खान के साथ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आई एम श्योर वैसी रिलेशनशिप होगा जैसे कि मेरे साथ है. आप देख रहे हैं पर्सनालिटी सेम ही है आजकल, बल्कि मैं नवाज हो गया और ये सलमान हो गए. मैंने एक दिन मैंने बजरंगी में इनसे मैंने पूछा कि आओ भाई एक आध ड्रिंक मार लेते हैं. इसने नहीं, कल फेस पफी लगेगा. आप जानते हो कि मैं नवाज भाई को पहले कैसे मिला?
मैं किक देख रहा था और मैं सब बच्चों को अपने साथ ले गया था। साजिद भाई की ट्रायल थी यशराज में, तो मैं सब बच्चों को पूछा था इंटरवल पॉइंट में, क्या बच्चा देखो क्या चाहिए, बेटा देखो क्या चाहिए। तो मैं मेरे आसपास बच्चे बैठे थे, तो मेरे सामने भी एक बच्चा बैठा था, तो मैंने हाथ डाला ऐसे, बेटा तुझे क्या चाहिए। वो नवाज भाई थे। तो जब नवाज भाई टर्न किया तो सॉरी नवाज भाई, चुपचाप बैठे थे नवाज भाई। सेट पे भी ये जब आते जब जाते पता नहीं लगता, हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो सामने खड़े हमारे हमारे सामने खड़े हैं। एंड ही इज द मोस्ट हम्बल नाइसेस्ट पर्सन टू वर्क विद। बोलते हैं ना चोर बॉडी है। इनकी चोर पर्सनालिटी है, पता नहीं लगता कब आए कब गए। और इस फिल्म की एक खासियत है कि हमने इस फिल्म के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो, हर लुक, फ्रीकी लुक्स, हर साइज, हर उम्र के लोग लिए हमने। एक विचित्र काइंड ऑफ कास्टिंग है जो आपको ये पिक्चर में दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको हम दिल्ली से ढूंढ के लेके आए, फैशन वर्ल्ड में घुस गए थे, एंड देन वी थॉट के वापस से क्यों ना, बहुत मेहनत की उन्होंने लुक पे। आजकल क्या चल रहा है भाई? आजकल क्या चल रहा है भाई? हॉट चल रहा है। इनकी कास्टिंग उसकी वजह से हुई थी। Nawaz, towards your right here. डर लग रहा था ये फिल्म नवाज, कुछ आपको प्रिपरेशंस करने पड़े गोल्फ सीखने के लिए, बिकॉज सेट पे गोल्फ कंसल्टेंट थे, कुछ सीखा आपने, कुछ बताएंगे उस बारे में? हाँ, चूँकि मैंने कभी गोल्फ इससे पहले खेला नहीं था, पहली बार, तो इसलिए बहुत टेक्निकल गेम है तो सीखना तो पड़ता है। तो हम लोग सिद्धार्थ के साथ काफ़ी प्रैक्टिस की यहाँ पे चेंबूर में, और फिर दिल्ली में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उससे आई थिंक 10-12 दिन शूट प्रैक्टिस की उसकी। So my question is to you here towards your right side. The movie would be clashing with Siddharth and Katrina's Bar Bar Dekho. Do you have any worry about the box office clash? Say this for my wife. You got your answer? No, I think there's so much of crowd now, there's so much of traffic now. Every Friday's got some release. What we actually banking on is the title is Freaky Ali. It's 9 September. It's the second Eid of the year, and it's Bakri Eid. So, and it's a long weekend. We strategically market where the market strategy was concerned. We planned it that way. So we always had planned that. And there's enough space for 2 films. Inshallah, I hope for Farhan and Excel that even that film does well and we do well, because they both are of a certain genre. Katrina does well, Siddharth does well, Arbaz bhai does well, Jess does well, Nawaz does well. We all do well. We all do well. So yeah, and I don't think both are such big releases. They've got a niche audience, and there would be space for both of us. Salman, what would you like to say on this clash between 2 movies? It's not a clash. It's not a clash. There's no clash at all. If you want to make it a clash, make it a clash. But there's no clash at all. And we hope that Katrina and Siddharth's film also does well. And Farhan is also like a kid brother to us. He's Javed Saab's son. So we want both these films to do well. And it's a good day to release these movies. And they're not like that 4,500 screens release that we don't have those many theaters for 2 films to release. So I think both the films have got the amount of theaters, and both are different kind of movies. So I'm sure the audiences will go and see one and then the other. Now which one they prefer to see first, that is left up to them. You have only sung a song in the movie, right? Song? Salman? What? नहीं, if I am the dying to sing, if you say, put pressure onto him. मैं तो तड़प रहा हूँ कि एक मेरा गाना. You know, there's one henchman's role. Jackie Shroff is playing this Don, okay, and I'm standing, and this henchman is standing right behind. There's a henchman's role. 5 days. I told him to give me the role, he didn't give it to me.
Hi Salman. And you know why I didn't give it to him? Because Jagu's role was supposed to be a surprise. I was wondering why he's not here. So, Nawaz, how's the experience? Chalo, you got your surprise today. Huh? हाय सलमान आज विकी अली का ट्रेलर रिलीज हुआ है हो गया? और आज साथ ही फ्रेंडशिप डे भी है तो आपके यही तो मेरी दोस्त तो जी हाँ, दोस्त। हम माने कि इंडस्ट्री में आपके सबसे अच्छे दोस्त एमी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेल एंड फीमेल, और जो उस गिनती में भी नहीं आते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। कोई एक पशु इंडस्ट्री से पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े इंडस्ट्री बहुत से सारे। कोई एक किसका नाम सुनना चाहिए जिससे आपको कोई फायदा हो? आप सच बता दीजिए। सी सभी दोस्त हैं, बट क्लोज दोस्ती में है क्योंकि बचपन से देखा है तो ये संजूद है, एंड देर इज शाहरुख हो गए, आमिर है, और ये सब बोरिंग लग रहा है ना, लड़की में नहीं तो मैं आपको नाम। कटरीना मेरी दोस्त है, और जिसकी पिक्चर इन्हीं के साथ रिलीज हो रही है, तो मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ। थैंक यू। Nawaz, how's your experience with Amy? You were romancing her. So how was it? सच freaky experience. सच समझ कर बोलना। फ्रीकी एक्सपीरियंस रहा। एमी भी तो कुछ बोलेगी। Okay. Well, I actually fell in love with Nabaz on screen in Gangs of Wasseypur. So my love story started there with him. And I must admit, I was quite nervous to act alongside him because I know what an excellent actor he is, basically. बहुत दिन अक्षय कुमार। Very different. And I must admit, Navaz has taught me a lot throughout filming. And he's so intense. He's taught me about my Hindi and how to interpret different things. And I actually don't know when he's acting and when he's not acting. It's that real. So I've taken a lot from our romantic trip of Freaky Alley. So. Nawaz, आप भी कुछ बोल दो please. Your turn. Yeah. बहुत wonderful experience working with Amy. Yeah. The scene also taking वसूली with अरबाज, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे नवाज आप? क्या किसके बारे में? आप वसूली कर रहे थे वो पारसी लेडी से। हाँ, हम लोग गए थे ना दोनों। हाँ, तो मिला एक्चुअली कुछ नहीं मिला वहाँ पे, खाली हाथ वापस आ गए। गोली खाए, और एक ही आदमी जिस दिशा में गोली जाती है उसी दिशा में आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर, उसी दिशा के अंदर डाई मारते हैं, वो अरबाज खान। वो है डायरेक्टर। आपको बचा देते हैं एक्शन डायरेक्टर, बस कौन थे वो? I'm also gonna see a glimpse of Salman Khan in this movie. You're already seeing this is the biggest performance of the film here. No, yeah, I mean, we have been honest with the film. We've stuck to the genre. It is Nawaz Bhai's film. The characters of Jas, of Niketan, of Arbaz Bhai, Maqsood. When the casting was done, we've got Mukesh who's done the casting. So we've stayed honest to the genre, and but we need. I requested Bhai to be a part of the film so that we can promote the film and it reaches more eyeballs. So that's what I didn't mean that, but it reaches more people. It reaches more people, and I was right? Okay. No. Now you never know. Now it's going to be interpreted. So yeah, but I'm glad that he came on board, and I was actually told that आप संडे को कर रहे हो तो प्रेस नहीं आएगी, लेकिन अगर सलमान पे आएंगे तो प्रेस आएगी. तो ऐसा ठीक है. So we actually. No, but Salman Bhai was, in fact, I cancelled his trip. He was supposed to leave to Ladakh last night.
and I requested him to stay back so that we could get everyone together. And I'm so glad that all you guys are here, and it's your reach that is going to make this film popular. So please reach out to everyone because we made all the effort. Salman, straight. Salman, straight. Salman, here. Straight. Very straight. Very straight. Salman, why is golf seen as a rich man's sport? And we've seen the movie where a rich looks down upon a poor man when he tries to enter this rich man's sport. So why does that happen? इसका जवाब आप ही मुझे देंगे. इसका जवाब है आपके पास? सर मेरे पास तो नहीं है. आपसे देखिए पहले तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आपको रियल एस्टेट चाहिए, गार्डन चाहिए, ओके? उसके ऊपर से द गार्डन हैज टू बी इक्वल, फिर वहाँ पर पानी, यू नो, लैंडस्केपिंग, ये तो हुआ. बगल के अंदर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वे पीपल सिट डाउन वगैरह. तो जैसे कि 18 कोर्स गोल्फ क्लब है, वो 18 कोर्स गोल्फ क्लब मुंबई में इस वक्त पॉसिबल है नहीं है. दूर भी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर ये स्पेस पॉसिबल है. फिर वो बॉल्स, क्रिकेट में एक बॉल होता है, यहाँ पे ढेर सारे बॉल्स होते हैं. क्रिकेट में एक बैट होता है, यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स होते हैं. फिर एक आदमी के साथ दो आदमी चलते हैं. फिर वो गोल्फ कार्ड्स होते हैं. तो ये गेम बेसिकली मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था वॉकिंग के लिए. अब वो इतने अच्छे बड़े प्रोफेशनल लेवल पर आ गया है कि इट इज़ बिकम द लार्जेस्ट सेलिंग स्पोर्ट राइट नाउ, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट राइट नाउ आफ्टर क्रिकेट और बिफोर क्रिकेट इवन. यहाँ पे क्रिकेट है बट लेकिन बाहर गोल्फ भी है. अब जैसे हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल है. अब बास्केटबॉल तो हम लोग यहाँ पे खेल लें, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें एक पोल के ऊपर, वहाँ पर एक बास्केट डाल दें पोल के ऊपर. आबादी इतनी है कि 11 वहाँ पे चले जाएंगे, 11 यहाँ पे चले जाएंगे. But who asked this question? Just you, right? No, it's a very valid question, and that's what the film is all about. That there's a perception of golf, or tennis, or billiards, you know, where only the elite plays the game, and that's exactly what we have tried to break in the film. So do you think the elite really looks down upon a poor man when he tries to enter that zone? No. That's just his character in the film as a personality. That is him. That is him only. That's why we got the real that's a character in the film. But what we want to show is that it's not only golf. It's मौका सबको मिलना चाहिए, and how it's this man's journey from rags to riches, and he goes ahead and plays the game. So it's a very inspirational story. It's not looking down upon anything. That is basically his character is arrogant in the film. You have other golfers in the film who are very supportive towards Nawaz Bhai playing, the character Vari playing, and reaching tournaments and encouraging him. It's just that he's producing the film. That's as his character. But these sports are expensive sports to play. Nawaz, on a lighter note, ये क्या था? ये सीरियस नोट पे था आपका? On a lighter note, ट्रेलर में हमने देखा वो एक सीन आता है जब एक लड़की आपसे पूछते है सेक्स और आप कहते हैं करने का बहुत मन है लेकिन आई ने कहा है शादी के बाद. आपका नहीं है? So, खुद ही शर्मा रहे हो. Is that something you would like to advocate in real life as well? I mean, what is your take on it? शादी हो चुकी है, too late है. सवाल करने मेरी शादी. सर फिर सलमान आप ही बता दीजिए, आपकी तो हुई नहीं है. ये तो मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूँ कि शादी भी नहीं हुई और वो भी नहीं हुआ. वो कॉफी विद करण, ओके. So you mean to say Salman, also one more thing. I mean to say I'm not like you. Salman, you're one of a kind. Salman, also one more thing. Tube Light, we are all awaiting a lot about the movie as well. Do we see you romancing? I see one Tube Light there. Freaky Ali की प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे चले गए Tube Light के ऊपर. जब Tube Light का टाइम आएगा उसको अभी से ऑन कर देंगे. टिमटिमाते वो जल जाएगी उस वक्त. टाइम है उसके लिए. Will you be romancing a Chinese actress? No, Salman, कुछ तो बता दीजिए. Some update. Let's stick to the movie, please, right, guys? I'll give it to you later. सलमान, रियो ओलंपिक शुरू हो गया है तो आपकी किन खेल और किन खिलाड़ियों पर नजर है, क्योंकि फिल्म भी खेल से जुड़ी है. अभी तो
I thought was it Deepika was going to win gold, but she came 8th, no? No. है ना? दीप्ति. और क्या शुभकामनाएं देंगे खिलाड़ियों को? तो दे चुका हूँ भाई. अब तो वहाँ तक तो मेरी आवाज पहुँचेगी भी नहीं. नवाज भाई,